Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. So our next topic is Lipschitz continuity. So ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आता है, इसका भी यूज है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का। कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने में यूज होता है, कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वो इक्वेशंस आ जाते हैं, नहीं तो कंडीशंस उसको बहुत ही सिंपल कर देता है ये, हम जब भी यूज करते हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ यूज इन द फर्दर पार्ट ऑफ कोर्स एंड इट हैज मेनी and is used in many derivations made in different engineering branches। हम लोग कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो वहां पे ये कहीं कहीं यूज होता है। सो लेट अस प्रोसीड टू आवर टॉपिक। तो इसमें हम लोग बेसिकली सफिशिएंसी पढ़ रहे होंगे अबाउट लिप्शिट्ज़ कंडीशन का जो सफिशिएंसी है वो। So if f is such that df by dy exists and is bounded for all x and y belonging to the domain। अगर हर x और y के लिए ये जो उसका डेरिवेटिव है, स्लोप है y पे, वो एग्जिस्ट कर रहा और बाउंडेड है, then f satisfies Lipschitz condition with respect to y in the given domain where the Lipschitz constant m is given as del of f by del of y। तो वहां पे हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं कि इसका स्लोप क्या है। सो दैट इज आवर लिप्सिट कांस्टेंट। सो लेट अस सी द प्रूफ। सो प्रूफ इज मीन वैल्यू थ्योरम। सो वी अप्लाई द मीन वैल्यू थ्योरम टू इट, f of x comma y1 minus f of x comma y2 is equal to y1 minus y2 into del of f by del of y। So we replace this with m। So अब देखते हैं कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। So ये जो फंक्शन है इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख रहे हैं, f of x कॉमा y1 mod of माइनस f of x कॉमा y2। इसको हम ऐसे जानते थे, लेस देन इक्वल टू m इंटू मॉड ऑफ y1 माइनस y2, बट यहाँ पे हम लोग स्लोप एट y से इक्वेट कर रहे हैं इंटू मॉड ऑफ y1 minus y2। So this means that f satisfies the Lipschitz condition। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। अभी तक तो सिर्फ ये देखा कि m को सब्सटीट्यूट कर देंगे स्लोप ऑफ y से, स्लोप ऑफ f एट y से। सो f of xy इज इक्वल टू y स्क्वायर डिफाइंड इन सम रीजियन d। कोई डोमेन है, गिवन डोमेन, वहां पे एक फंक्शन है। सो उसका जो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है इस फंक्शन का कम्स आउट टू बी 2y। so is bounded in D। so the Lipschitz constant is del f by del y at the boundary। तो हम लोग बाउंड्री पे उस जो स्लोप है जो बाउंड्री पे एग्जिस्ट कर रहा उसका वैल्यू निकालेंगे। दैट बिकम्स आवर Lipschitz कांस्टेंट, बिकॉज वहां पे लेस देन इक्वल टू था, तो वो जो बाउंड्री वाला पॉइंट है उससे हमेशा वो लेस ही होगा बाकी सारा। सो इट इज here because we have seen that y, mod of y is less than equal to p। so mod of 2 into mod of del f by del y is 2 into mod of y। this comes out to be 2 times mod of y। so in place of y we put b because at the boundary the value of y becomes b। so it comes out to be 2b। तो यही अपना सफिशिएंसी का कंडीशन था। और अब फाइनली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि एग्जैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस दिख रहा। सो हियर द वैल्यू ऑफ m इज x क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ n इज 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। सो according to the theorem we know that m dx is equal to n dy is equal to
u of x comma y. तो ये वाला कंडीशन हम जानते हैं, तो we apply it here. So integral dx y square dx, this is x raised to 4 by 4 plus 3x square y square by 2 plus some k times y. So ये आया, and integral of 3x square y plus y cube this comes out to be 3x square y square by 2 plus y raised to 4 by 4 plus some f of y, function of y. तो हम यहाँ पे y we are integrating with respect to y, so the constant come out as x. So plus f of x, here x is the constant, so we are clearly observing that f of x is x raised to 4 by 4 and k of y is y raised to 4 by 4. So finally u of x comma y is written as 3x square y square by 2 plus x raised to 4 plus y raised to 4 by 4. So this is our complete required answer. So this was for this lecture, and thank you.